हेलो फ्रेंड्स, होप यू आर गुड। तो आज हम देखेंगे CSIR का जो केस का नोटिफिकेशन आया है। तो हम देखेंगे इसमें क्या हमारी प्रायोरिटी ऑफ सब्जेक्ट होनी चाहिए और हम कैसे इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं एक आसान तरीके से। सो एज यू नो दे आर 444 पोस्ट्स ऑल टुगेदर। तो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू नाउ। यस, सो ये आपके नोटिफिकेशन डेट्स हैं। आई होप ऑल ऑफ यू हैव फिल्ड द फॉर्म्स ऑलरेडी। इफ नॉट, डू हरी अप एंड फिल द फॉर्म एज सून एज पॉसिबल। नाउ इफ़ वी सी अहेड, ये हमारा बेसिक डिटेल्स है लाइक पे स्केल्स ऑफ SO एंड ASO। सो ये सब आपने देख ही लिया होगा। सो नाउ इफ वी हेड टू दी vacancy part, so this is the part which is important for us. Why? Because as you can see, although we have 444 posts, but out of that only 76 posts is for level 8, that is SO posts. So those who are targeting this SO post do need to keep in mind that the cutoff will certainly be higher than ASO posts. It will be more. So now we will see how we'll approach this so that we can come in this bracket. हमारा टारगेट ये होना चाहिए कि हम 76 सीट्स में से हमें एक सीट लेनी है। तो देखते हैं कैसे हो सकता है। नाउ लेट्स मूव अहेड एंड दिस यू कैन टेक एज बैकअप ऑप्शन। नाउ देयर आर 368 पोस्ट्स, सो दिस यू कैन टेक एज बैकअप एंड नॉट द फोरमोस्ट ऑप्शन, क्योंकि अगर आप इसे टारगेट करेंगे तो यू सर्टेनली मिस अबव SO पोस्ट। सो हमारा टारगेट ये होना चाहिए दैट वी शुड टारगेट SO पोस्ट एंड टेक ASO एज बैकअप ऑप्शन। सो आई थिंक आई एम क्लियर। हमारा टारगेट है SO पोस्ट एंड वी आर कीपिंग ASO एज बैकअप एंड नथिंग एल्स। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। नाउ इफ यू सी इट, these are some of the basic details. Yes, now this is the most important part. अगर हम एग्जाम पैटर्न देखें, this is the most important part, that is general intelligence, reasoning and mental ability. And next we have general awareness section and the Hindi or English descriptive paper section. Now again you would be knowing that this is the part of phase 2, so we did not consider it now. Now our priority should be phase 1, that is this one. This is the part phase 1 that we need to target. Now how will we target that? This 150 marks and 200 marks are important and both will be counted in your final cutoff. तो ये दोनों इसमें से कोई भी क्वालिफाइंग नहीं है। First thing is this, that you need to keep in mind that this is not qualifying. Both will be counted. दोनों ही ऐड होंगे आपके फाइनल कट ऑफ में। तो you do not have to take first part, that is phase 1 as prelims of UPSC, जो केवल क्वालिफाइंग होता है। No, this part will be counted in your final cut off and hence you need to focus on here. चलिए अब आगे देखते हैं कैसे हमें ये करना है। नाउ अगर आप देखें इस सेक्शन में जो आपका जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, इट इज़ अ ह्यूज सिलेबस। कैसे वो मैं देखते हैं पहले। नाउ यू सी, इफ़ यू सी दिस सिलेबस ऑफ जनरल अवेयरनेस, यू सी इट कंसिस्ट्स ऑफ हिस्ट्री, पॉलिटी। इफ़ यू टॉक इन टर्म्स ऑफ UPSC, it is history, this is polity, and this is IR plus current affairs. So it is considering almost, this part is GS2, this is GS1 and this is also GS2. तो अगर आप देखें तो मेजरली GS2 पूरा और you can say half of GS1 will be covered in this. So this is the syllabus for this part, general awareness part. Apart from this, we also have English comprehension. Now this is similar to any banking exam pattern you can see, or in UPSC pattern you can say it like CSET. So this is like CSET. You would have certainly covered this in CSET. तो अगर हम देखें हमें ये कैसे कवर करना है, उससे पहले हम देखते हैं हमारा अगला पार्ट। यस, नाउ दिस इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट, दैट इज जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्यों है? बिकॉज इट इज ऑफ 200 मार्क्स। अब पेपर वॉज ऑफ 150 मार्क्स बट दिस इज ऑफ 200 मार्क्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसमें अच्छी चीज़ क्या है, अनलाइक दिस पार्ट यू आर गिवन द ब्रॉड क्लासिफिकेशन बट यू आर नॉट गिवन द माइन्यूट क्लासिफिकेशन, जैसे कि इससे कितने क्वेश्चन आएंगे, इससे कितने आएंगे, इससे कितने आएंगे, दिस थिंग्स आर नॉट गिवन। तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा कि किसमें से कितने आएंगे। मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी अराउंड 33 क्वेश्चन ईच, और यू कैन टेक इट लाइक एवरेज 30 to 35 क्वेश्चन आएंगे सभी से। सो इफ़ यू कंसिडर all this will have 30 to 35 questions on an average. Same goes here, it will be 50 questions, so I think it will be divided around 5 questions each topic.
So you need to focus accordingly. If you see here, a very detailed and minute breakup of marks is given. तो देखिए सारे से 25 क्वेश्चंस आएंगे. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. नाउ हाउ यू नीड टू प्रायोरिटाइज. ऑफकोर्स पहली प्रायोरिटी आपकी यहाँ होनी चाहिए क्योंकि इसमें से मार्क्स काफ़ी आएंगे. ना अगर आप देखें ये जो जनरल एबिलिटी वाला पार्ट है, दिस इज सेम एज योर यूपीएससी सी सेट and those who are preparing for banking, it is similar to your banking pattern, nothing different. Apart from that, if we see, this is again the quant section, and of course this is your reasoning section. Now this is the general science part, that is 11th and 12th, or even you can take 8th, 9th, 10th also. These classes will be covered. ये कैसे करना भी हम देखेंगे. A very easy method is there to do this. मैं भी आपको बताऊंगा. It's very easy to do this. इसका आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है. Now, after that, this part is an important part because if you see this part, this is both. If you see, this part is both economy and environment. तो ये थोड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा बिकॉज इन दिस इकोनॉमी पार्ट इज़ अ बिगर वन. अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ा इकोनॉमी देन दिस माइट बी अ टफ केक. इफ यू गो अहेड, नाउ दिस इज एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. नाउ फॉर यूपीएससी दिस इज एन एंटायरली सब्जेक्टिव पेपर. ये प्रीलिम्स में नहीं आता है. सो हियर यू कैन एक्सपेक्ट सिंपल क्वेश्चंस लाइक what is attitude. There will be 4 definitions given and you have to tell which one is the attitude, or you will be given an example suppose of normative ethics and you need to tell what is normative ethics, or you may be given a question based on applications of ethics that might come. ये कैसे करना ये हम अभी देखेंगे. Now if you see, the next is decision making, problem solving. Now this may seem a very difficult one but ये बहुत easy है. I will tell you how. I'll just give you a PDF of around 15 to 20 pages and you'll be done with this. आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही पढ़ना है and decision making part will be done. Now next if we go, now this is management practices. Again there will be around 15 to 20 pages notes. आपको बस वो मगअप करना है and you have to apply it in the exam. I don't think इसमें 25 questions हैं तो most probably 15, just a minute. In this management principles and practices, out of 25, I think 20 or 15 will be direct questions and 5 to 10 will be applied most probably. और ये शायद इससे भी कम होंगे. I don't think applied part will go more than 5. तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है. Again I will give you a PDF consisting of 15 to 20 pages and this should suffice entire thing, entire management, nothing else. Again this is national geography part. For this you have to do nothing but the class 11th and for this you have to do nothing but the NCERTs. They should suffice. Now let's see how we should cover these subjects in detail. Now I'll tell you the priority of subjects. Of course out of this the easiest part to cover will be this part because either you are preparing for CSAT in UPSC or you are a banking aspirant, both cover this part. So you should hunt for these 25 questions first and again this one second. So ये quant and reasoning is something that every aspirant will be solving, whether he is from UPSC background or he is from banking background. So irrespective of that you have to hunt for this question. ये 50 question आपके हाथ में होनी चाहिए. This is the priority number 1. If we go next, again for the general science part there is nothing much to do. आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है. There will be a 15 to 20 pages PDF will be given which will contain summary of entire NCERT from class 9th to 12th or even class 8th also. I think I'm not sure, मैं देख लूँगा. So you don't need to cover anything, just to cover this part. So this general science will be taken care of by me altogether. So just 15 to 20 pages of PDF. आपको ये कहाँ मिलेगा? So आपको just एक चैनल पे जाना है. Again I'm giving the link, Logical Aspirant. You go to this link is in the
description, and trust me, each and everything that you need for this exam, each and everything will be given in this telegram channel, nothing else. Extra misguidance नहीं, कुछ नहीं, and trust me, ये बहुत कम मटेरियल है, it's minimum. See, I am not a member of any coaching institute, nothing at all, so I don't have any personal benefit. ना मैं आपसे 1 भी रुपया चार्ज करूँगा. The fee is ₹0. You do not need to give me anything. What you just need to do is get this PDF and read it diligently. Read it, revise is everything. आपको बस ये PDF लेना है, डाउनलोड करना. If you can get the printout, very good, and just keep reading it, revising it. That's it. आपको कुछ नहीं करना है. I am not going to charge you any money. The fee is of course ₹0. You do not need to pay me anything. इसके बाद हम देखेंगे बाकी के कैसे कवर करना है हमें. But before that, remember, the market is full of misguidance and paid mentorships etc etc, जो आपको बहुत कम फी etc etc में mentorship देंगे, and they will say a whole lot of things and misguidance. But remember, you don't have to do anything. Just head to this telegram channel, get everything for free, and trust me, you will be through. You just have to read, revise and practice. That's it, nothing else. Now if you see next, this part, decision making, I told you, again there will be a PDF, 15 to 20 pages PDF. Let me show you how will it be. Again you can see this is the PDF for NABARD, the PDF for decision making, and trust me, it will be like this only. You don't need to hunt for resources. Now this is the PDF. इसमें आप देखिए, इसमें everything is given, and you can see, if you see, this PDF is not more than yes, so it is 27 pages and it contains both the decision making and the management part. If you see, let me show you the management part. Yes, so here it is the management part, and you'll get everything related to management here, and trust me, you don't need to read anything more than this. This would suffice. So your entire management will be covered here in this single PDF, and you can see the decision making part will be covered here. So around 15 to 20 pages of PDF will do for both. So this PDF is around 27 pages, so around 15 pages are decision making and 10 pages for management. So around 12 to 15 pages is for decision making and around 10 to 12 pages for management. And trust me, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है. The content is given in very compact form. देखिए बहुत सब सटा सटा के लिखा गया है ताकि कम पेजेस में ज़्यादा कवर जाए. You can even take the print out of this, and I think this should suffice. You need not do anything else. आपको बस क्या करना है, remember, head to the telegram channel, Logical Aspirant. That's it, nothing else. Now again in this channel you will get many other things, like for polity part, this is the PDF that consists of entire statutory bodies in just 2 to 3 pages, in that too a table format. So you'll get this here. This also for the constitutional bodies, the entire constitutional bodies in just one PDF, that too 2 pages is there on the channel. You can head to it and download it directly. Go and download it now only. So this will help you enhance the preparation for polity as well. Again, there are some content there for history, and slowly within a day or two, 1 से 2 दिन के अंदर मैं हिस्ट्री के सारे कंटेंट अपलोड कर दूंगा. आपको कुछ नहीं खरीदना है, कहीं कोर्स नहीं लेना है. यू कैन रीड इट एंड फिनिश इट ऑफ नो टाइम. तो अगर हम आगे देखें, सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी इस टेलीग्राम चैनल पे. तो अभी आप इसे जाकर ज्वाइन कीजिए ताकि आप पीछे न रह जाए बाकियों से. जस्ट लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन. जस्ट गो एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल एंड एक्सेस ऑल द PDF. सारे PDFs आपको मिल जाएंगे, सारे के सारे. It is totally free, and trust me, I'll give you everything that you need for this exam. Everything means everything. So you don't have to hunt for resources. कहीं भी आपको misguidance के लिए नहीं जाना है. और a worst term would be paid misguidance. Now we are done with the resources of general science, वो मैं आपको दे दूंगा.
डिसीजन मेकिंग मैं आपको दे दूंगा, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस मैं आपको दे दूंगा। नेशनल ज्योग्राफी के लिए मैंने बताई आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, वो भी पूरी नहीं, क्लास 12th की एनसीईआरटी है इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। You just have to read that national geography, that's it, nothing more, only class 12 geography. Okay, so what remains now is this one, ethics, integrity and aptitude. मैं देखूंगा अगर हो पाए तो अगले 4 से 5 दिनों में, in 4 to 5 days, I'll make a PDF and I'll upload it on the same Telegram channel. क्योंकि अगर आप यूपीएससी के पैटर्न से जाएंगे, देन दिस सिलेबस इज़ ह्यूज, बहुत बड़ा सिलेबस है, वेरी बिग आई वुड से, बहुत बड़ी सिलेबस है। उससे बेटर होगा कि फॉर दिस पार्ट आई विल मेक अ PDF ऑफ अराउंड 14 to 15 पेजेस, दैट शुड सफाइस। इससे आपका पूरा एथिक्स इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड कवर हो जाएगा। आई ट्राई टू मेक इट। ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपका मिस ना हो, एंड डू मेक श्योर टू रीड दिस PDF, इट विल बी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, ट्रस्ट मी, it will be a comprehensive source of ethics, so you don't need to hunt for this, ये सब आपको मिल जाएगा, and trust me, all this is absolutely free, and when I say free I mean ₹0 in it to pay for this. The next part is this part. I think this and history should be of least priority as of now, क्योंकि आपको ये देखना है कि you have to find out the value for time, किस रिसोर्स पे आप कितना टाइम दे रहा है, वो कितना वैल्यू मिल रहा है। आई एम प्रीटी श्योर इन सब रिसोर्सेज में आपको वैल्यू फॉर टाइम जो होगा दैट विल बी मैक्सिमम, ट्रस्ट मी, एंड दिस रिसोर्स इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट इज़ अ बिग वन, सो इट विल टेक मोर टाइम, और आने क्वेश्चन इससे 25 ही हैं, वो भी दोनों मिला के, इट मीन्स इकोनॉमी प्लस एनवायरनमेंट मिला के आपको 25 क्वेश्चन आएंगे। उससे अच्छा आप अपना टाइम यहाँ दे, वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होगा। इससे अगेन इफ आई टेल यू, इवन इफ यू रीड अराउंड 15 पेजेस ईच फॉर द 3 subjects, it will be around 45 pages only. So for 45 pages you will get around 75 marks, you can see this. But if you take these subjects, it will not be less than 200 pages minimum, this I am saying, minimum 200 pages of content, that will give you only 25 marks. तो आपको देखना है कि this is a way easier and these 3 will be easier. Altogether you just need to read around 100 pages, and this will give you this 75 and this 75, around 150 marks. So you need to hunt like this. Now if we go next, the second last priority should be this part, polity and IR. In this also IR should be the first, and then after polity, based on the value for time, and of course last part should be history. Even this should precede economy and environment. तो अगर मैं आपको देखूं तो आपका सीक्वेंस ऑफ सब्जेक्ट ये हो सकता है, फर्स्ट यू शुड गो फॉर इंग्लिश प्लस क्वांट प्लस रीजनिंग, नेक्स्ट you should go for general science, then for ethics, management and decision making part. After this you should go for IR, then polity, then history, and at last you should go for economy. And environment. So I think this should suffice. If you go with this pattern of study, I'm sure nobody is going to stop you. So again, the disclaimer is, one thing that you do not have to miss is to join this Telegram channel. It is very important. When I say very important, it means very important. The link is in the description. Do not get misguided. No misguidance, only help, nothing else. Consider it a help from your big brother,
and not a coaching institute or anything. So just do this and you'll be through. That's it. And if you like my content, you can definitely like it, subscribe it, and if you need me to make a video on any other thing, if you need any other thing, then please do comment below. And when I say anything, means anything you need from my side. I am going to help you at any cost. Just mention it in the comments, and trust me, I am going to reply each and every one of you. Just write the comment on what do you need me to make a video on. If you need the strategy for each subject, I can do that also. And trust me friends, there is ample time left now. बहुत time बचा हुआ है. Time is not less. 1.5 to 2 months is not a less time. So prepare sincerely. Comment below whatever help do you need from my side, and I will work it. So just like the video and subscribe the channel, and of course share it in all the groups and with all your friends. Thank you.